Hello students, in class 9 biology after the skeletal system, today I am going to teach you the another connecting tissues, and that is the vascular tissues or fluid connecting tissues. It is mobile connecting tissues which constitute the transport system of the animals. यह मोबाइल माने गतिमान रहने वाला टिश्यू है जो जनरली एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है. इंस्टीड ऑफ द फाइबर्स के बावजूद के अलावे द मैट्रिक्स कंटेन्स द फाइब्रिनोजेन. फाइबर्स के अलावे मैट्रिक्स में फाइब्रिनोजेन होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस द फाइबर्स एज ड्यूरिंग द कोगुलेशन. कोगुलेशन मीन्स होता है कोगुलेटिंग ऑफ द ब्लड का जमना. एंड मैट्रिक्स इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द कंटेंट सेल्स. Vascular tissues are of two types, blood and lymph. Now just I am going to tell about the blood. Yes, just I have a labeled here the vascular or fluid connecting tissues. The vascular tissues are the two types, the blood and lymph. The blood, it is a reddish colored, viscous, sticky and saltish vascular tissues that flow inside the blood vessels by means of the pumping activity of the heart. जैसा कि ब्लड जो है रेड कलर का विस्कस, स्टिकी और साल्टी वैस्कुलर टिश्यूज है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है. और ये फ्लो क्यों होता है? by the activity of pumping activity of the heart. The pH of the blood is 7.4 and blood has two parts, fluid plasma that is the 55% and the blood cells that is 45%. Now about the plasma, it is a liquid matrix of the blood which has pale yellow color. ये प्लाज्मा जो होता है लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड का जो जनरली पीले कलर का होता है और 90 to 92% इज वाटर इसमें होता है. 8 to 10% consist of the organic and inorganic substances. Albumin, globulins, fibrinogens are the major types of the soluble proteins. इसमें soluble proteins होते हैं जैसा कि मैंने कहा albumins, globulins, fibrinogen. A type of globulins called the gamma globulins that is function as the antibodies. They are also called the immunoglobulins. Fibrinogen help in formation of the clot at the time of blood coagulation. जो फाइब्रिनोजन होता है वह क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है जब ब्लड कोगुलेट होता है. अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द प्लाज्मा are the nutrients like the glucose, amino acids, vitamins, fatty acids and fat drops. Anticoagulant that is the heparin, hormones and excretory products. Almost all types of the inorganic substances are present in the plasma. The maximum concentration is that of the Na plus Cl.
यहाँ दो तरह का Na प्लस एंड Cl माइनस होते हैं. अब वन थिंग in the plasma there is the serum. It is the watery fluid which separates from the blood when the latter coagulates. It does not contain the fibrinogen. जो सीरम होता है फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड होता है जो ब्लड को सेपरेट करता है जब ब्लड कोagulate होता है, इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता है. उसके बाद आता है ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पोसेल्स, दैट इज द फॉर्म एलिमेंट एंड दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स. आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स. These white blood corpuscles are of two types: the granulocytes on the basis of the presence of the granules in their cytoplasm, and if the granules do not present in the cytoplasm, they are agranulocytes, and they are further neutrophils, eosinophils and basophils. Here agranulocytes, the monocytes, lymphocytes. Now go about the structure and details of the blood cells. Yes, now the red blood corpuscles or erythrocytes. इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है. They are biconcave, disc-shaped or eunucleate, means without nucleus, colored living cells which provide red colors to the blood. ये biconcave, disc-shaped, eunucleate colored living cells होते हैं जो रेड कलर प्रोवाइड करते हैं ब्लड का. एंड द नंबर इज वेरी लार्ज, दैट इज 4.5 to 5 millions पर क्यूबिक मिलीमीटर. एक क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी संख्या 4.5 से 5 मिलियंस तक होती है. 30 to 35% of the red blood cells consist of the iron containing reddish protein pigment called the hemoglobin, जिसके कारण कहा जाता है ब्लड का कलर रेड होता है. एंड हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट कैन आल्सो कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द हियर डायग्राम ऑफ द एरिथ्रोसाइट और आरबीसी. दिस इज सरफेस व्यू, दिस इज लैटरल व्यू. And now come to the different diagrams of the white blood corpuscles. The white blood corpuscles, all are white blood corpuscles 1, 2, 3, 4, 5, and they are also known as the leukocytes. Just earlier I have told you the white blood corpuscles are colorless nucleated cells which can change their shapes like the amoeba. ये जो वाइट ब्लड WBC जो होते हैं कलरलेस न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो अमीबा की तरह अपनी आकार को बदलते रहते हैं. एंड देयर नंबर इज 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. एंड दे आर मेनली ऑफ द टू टाइप्स. जस्ट अर्लियर आई हैव टोल्ड यू granulocytes and agranulocytes. Granulocytes generally contain the granules in the cytoplasm, and agranulocytes are those WBC, they have not granules in the cytoplasm. So granulocytes are the three types: neutrophils, basophils, eosinophils. Granulocytes have the irregular polymorphic nuclei and a number of large granules with the specific staining
properties. And they are of the three types: neutrophils, basophils and eosinophils. Just I have told. Now about the neutrophils. This is the diagram of the neutrophils. आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है सब में, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स इन तीनों डायग्राम में पाए गए हैं. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूट्रोफिल्स हियर द 3 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं 3 से 7 लोब. जैसे इसमें अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7. आई हैव शोन द 7 लोब्स ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द nucleus. And 50 to 60% of all the leukocytes are phagocytic. Now about the basophils. They are S-shaped nucleus. यहाँ न्यूक्लियस जो होते हैं S के आकार, S लेटर के आकार, up to 1% release histamine, heparin and serotonin. Here the granules are also present. Now the eosinophils. Now about the eosinophils. These are the 2-lobed nucleus. यहाँ न्यूक्लियस में 2 लोब होते हैं. 2 to 3% detoxicative. Number increases in worm infections. So this is about the granulocytes. Now about the agranulocytes. Do not have the large sized cytoplasmic granules and nucleus is not lobed. Here nucleus lobed नहीं होते हैं. Phagocytic and lymphocytes, a large rounded nucleus, 30 to 30% immunity about it. Here the monocytes, just I have shown you this is the diagram. Cytoplasm, nucleus, bean shaped nucleus. Here this is the diagram of the lymphocyte. This is cytoplasm, nucleus, rounded, lymphocyte. In this diagram there is no presence of the granules. So monocytes and lymphocytes both kept under category of agranulocytes, WBC. Now the platelets. Just here I have shown the diagram of the platelets. And its other name is thrombocytes, THROMBOCYTES. They are non-nucleated. Nucleus नहीं होते हैं. Small, oval or rounded, colorless cells, fragment with a number of 2 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर. ये एक स्वस्थ मनुष्य में बेस में 2 से 4 लाख, कहीं कहीं होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख भी आता है. लेकिन जनरल ये है कि नॉर्मल रेंज 2 लाख से 4 लाख तक होता है पर क्यूबिक millimeter blood. On exposure to the air, the blood platelets burst and release the chemicals, that is the thromboplastin, for coagulation of the blood at the place of the injury. Dear student, as you know, the blood platelets help in coagulation of the blood. अगर ये blood platelets नहीं होते तो हमारा blood coagulate नहीं करता. और अगर ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा हमारे शरीर में? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा. कहीं कटेगा, ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं. तो प्लेटलेट्स cells are the very important for coagulation of the blood. Now what are the functions of the blood? ब्लड के मुख्य कार्य क्या है? पहला फंक्शन हम देते हैं ट्रांसपोर्ट. द मेजर फंक्शन ऑफ द ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड द बॉडी, एंड this includes the nutrients
and nutrients like the glucose, amino acids, fatty acids, metabolic waste like the urea, uric acid, hormones, and the gases like the oxygen and carbon dioxide. इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है. सेकेंड फंक्शन द बॉडी टेम्परेचर. द ब्लड conducts the heat and regulation of the body temperature. थर्ड आता है pH. pH, it has buffers for regulating pH, power of hydrogen ion concentration. About it you will study in chemistry. Next आता है tissue fluid. The blood plasma leaks out of the blood capillaries and form the tissue fluid. The tissue fluid keeps the tissue moist. Moist बनाए रखता है, नम बनाए रखता है. Next is the immunity, and particularly the WBC fight the foreign microbes by eating them off. That is phagocytosis in nature, and producing the antitoxins and antibodies. They are thus soldiers of the body in offense and defense. मीन्स जो WBC होता है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. जब कोई फॉरेन पार्टिकल या जर्म्स हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो उनसे ये फाइट करता है, और फाइट करने के बाद उनको अगर हरा देता है तब वो जर्म्स का सिम्टम हमारे बॉडी में नहीं अपीयर होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है. If our WBC are defeated, then there will be the chances of appearance of the disease in our body. So, our body should be the strong immune system. Maintenance of the osmotic concentration. Blood is important in maintaining a proper concentration around the cell, inside the tissues and the organ. And next is the clotting. And in clotting, just you have studied the blood platelets, that is the last types of the blood cells, and that has a major role in coagulation of the blood or in clotting of the blood. After that, after the function of the blood, there is the last topic points related to these. After the blood, just I have told vascular tissue are of the two types, the blood and the lymph. So here just I am going to tell about the lymph. It is the colorless or light yellow fluid connecting tissues. या तो ये कलरलेस होता है या हल्के पीले रंग का कनेक्टिंग टिश्यूज फ्लूइड होता है, which is formed from the tissue fluid and filtered out blood. Lymph is devoid of the red blood corpuscles and blood platelets. lymph में RBC और blood platelets नहीं होते हैं. Proteins are fewer, माने बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं. So are white blood corpuscles. However, the lymphocytes are most abundant. Lymph flows through the lymph capillaries and lymph vessels. मैंने lymph किस में फ्लो होता है? lymph capillaries में या lymph vessels में. All the places they pass through the lymph nodes and lymph organs where the lymphocytes multiply and mature. जहाँ lymphocyte multiply करते हैं और mature बनते हैं, परिपक्व बनते हैं. They are also the sites for entrapping microorganisms. Lymph is ultimately passed into the blood, and the most of the organs and tissue pour their secretion and excretion into the lymph instead of the blood. So this is about the lymph. At last, there is the question arises in student's mind
what are the differences between the blood and lymph? The color of the blood is reddish or red, while the lymph color is nearly colorless. And the blood is generally opaque, while the lymph is generally transparent. Then water content in the blood is the 55%, while lymph contains the 94% water. RBC generally present in the blood while it is absent in lymph. Blood platelets also present in the blood while blood platelets are absent in the lymph. And the flow of the blood is rapid while the flow of the lymph is slow. So this is about the differences between blood and lymph. At last, what are the function of the lymph? Lymph, generally they are the large molecules, proteins and other macromolecules found by the liver and other body parts are poured into the lymph for passing into the blood. Next is the hormones. Endocrine glands, as you know, pour the hormones into the lymph for passing into the blood. Fat drops. Fat is absorbed by the alimentary canal by the lymph capillaries called the lacteal, not lacteal, LACTEAL. Water products. A lot of water products and carbon dioxide are first passed into the lymph, and the defense system component of the lymph and the lymph nodes defend the body against the pathogens. This is all about the vascular tissues or fluid connecting tissues. You like and subscribe my channel. That's all today from my side in class 9 biology.